Hello UPSC aspirants preparing for Civil Service Examination. Today we will be discussing important multiple choice questions for Prelims from POLITY section. So let us start now. Which of the following contain the philosophy of Constitution and is also soul of the Constitution? Option 1 is fundamental rights, option 2 is DPSPs, option 3 contains both DPSP and fundamental rights, option D is fundamental rights and preamble. So the correct option is option D, option C, fundamental rights and directive principles of state policy. Which of the following statement is incorrect regarding the features of directive principles of state policy? इनमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट किस कौन सा है regarding DPSPs. Directive principles resemble the instrument of instructions enumerated in the Government of India Act 1935. It is absolutely correct. They aim at realizing the ideals of justice, liberty, equality, fraternity outlined in the preamble. ये भी correct है. Directive principles are justiciable in nature. No, they are non-justiciable. वो justiciable नहीं होते हैं. सो ऑप्शन 3 जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट माना जाएगा. इनकरेक्ट. सो इट इज़ द ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास यही जवाब दिया जाएगा. ऑप्शन सी. Which of the following directive principles are not socialistic principles? इसमें हमें बताना है कि कौन सा DPSP है जो कि socialistic principles पे नहीं है. To promote the cottage industries on the individual or cooperation basis in the rural areas. ये तो गांधीयन प्रिंसिपल है. Option 2, to promote equal justice and to promote free legal aid to the poor. ये तो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. उसके बाद है to raise the level of nutrition and standard of the living of the people to improve the public health. ये भी हमारे पास सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. Option number 4, to secure for all citizens a uniform civil code UCC. ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है. तो हमें ढूंढना था नॉट सोशलिस्टिक. B2 and 3 are socialistic, so 1 and 4 is the correct option. 42nd, the Constitutional Amendment Act 1976 added 4 new DPSPs to the original list. तो हमें बताना है वो कौन कौन से थे. To secure opportunity for the healthy development of children, ये भी ऐड किया गया था. To secure equal just and free legal aid 39A, ये भी ऐड किया गया था. To take steps for the management of the industries, participation of workers in the management of industries, ये भी था. To secure for all citizens uniform civil code, ये नहीं है. 1, 2 and 3 are the correct option. So option A is the correct answer. Question number 75. Which of the following is not DPSP? इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? To minimize the inequalities in income and status and facilities and opportunities, yes, it is correct. To improve and protect the environment and to safeguard the forests and wildlife, ये भी DPSP है. To secure opportunities for the healthy development of children, it is also direct principle of state policy. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. ऑप्शन नंबर 4. सो ऑप्शन नंबर 4 DPSP नहीं है, ये बनता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन. Consider the following statements. In Champakam Dorai Rajan case, Supreme Court ruled that in case of conflict between fundamental rights and DPSPs,
फार्मर वुड प्रिवेल, मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो प्रिवेल करेगा, ये बोला था चंपकम दुराई रंजन केस में। इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड for the implementation of the directive principles of state policy. It is also correct. So option C, both 1 and 2 are correct. That जो चंपकम दुराई रंजन केस है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, ये फैसला दिया कि डीपीएसपीज जो है वो प्रिवेल ज़्यादा करेंगे एज़ कम्पेयर टू डीपीएसपीज। कौन फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। फिर गोलकनाथ केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता अगर आपको डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्ड एट क्रिएटिंग, जो डीपीएसपी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका मकसद क्या था, सेकुलर सोसाइटी बनाना नहीं, वेलफेयर सोसाइटी बनाना नहीं, सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाना नहीं, वेलफेयर स्टेट, एगलिटेरियन भी नहीं था, वेलफेयर स्टेट बनाना डीपीएसपी का एक मकसद था। क्वेश्चन नंबर 78, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स, जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मकसद क्या है, इसका पता ही हमें यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन डी है इज यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल is correct. Question number 45, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. ये 45 में बताया गया है। आर्टिकल 48, to organize agriculture and animal husbandry on the modern and scientific lines. To 48A, to protect and improve the environment and to safeguard forests and वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर 48A आएगा। फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमारे पास सिर्फ 48 आएगा। एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये 45 में है एंड ये 44 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडिड DPSP रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये हो गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो DPSP ऐड किया गया था 43B के अंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B। क्वेश्चन नंबर 80, in which case the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principles of state policy। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में बताया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, इनकी बैलेंस है, इनको हारमोनी में रखना है दोनों को। Consider the following statements regarding the fundamental duties of the Constitution of 80 to 90 हम fundamental duties से क्वेश्चन करेंगे। 42nd, the Constitutional Amendment Act 1976 were added in the Constitution। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दे वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, जो सोवियत यूनियन है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से वो इंस्पायर हो गए थे। इट इज़ आल्सो करेक्ट। सवारन सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन 1 and 2 and 3 are correct. Fundamental duties were incorporated in the Part 4A of the Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, inspired by the USSR and on the recommendation of the Savaran Singh Committee. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 made the following changes in the Constitution of India। जो 42nd Constitutional Amendment Act 1976 में लाया गया था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज लाई थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। एडिड 3 न्यू वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, एब्सोल्युटली ये करेक्ट है। एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय द सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए जो है वो ऐड करी गई थी कब, 42nd ऊपर हमने पढ़ा। deleted the right to property from the list of the fundamental rights and made it legal right, it was in
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर इसको 300A के अंदर रखा गया। मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, या कैबिनेट के एडवाइस पे बाउंड होना चाहिए। फिर 44 में उसमें लिखा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो वापस रिटर्न भी कर सकता है एडवाइस, लेकिन जब अगर वापस भेजेगी तो उसको मानना ही मानना पड़ेगा फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Question number 83. Article 51A contains which of the following fundamental duties of the citizens? 51 में कौन से fundamental duties citizens के रखे गए हैं? तो to provide the opportunity for the education to his child or ward between the age of 6 to 14 years. करेक्ट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की। to provide early childhood care and education for all the children until they attain the age of 6 years. 6 years तक आपको देनी है ये। it is not to uphold the sovereignty, unity and integrity of India. It is correct. to safeguard the public property and abjure violence. 1, 3, 4 are correct options. So option B is correct. to provide early childhood care जो है ये DPSP में हमने पढ़ा 45 में DPSP में जो up to 6 years of age में है ये DPSP में आता है। 5 की जो एजुकेशन देना है फ्रॉम 6 to 14 years of age, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। तो DPSP कहाँ तक आता है? 6 years तक, वहाँ तक आपको चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन until they attain the age of 6 years. Question number 84. 8 present. How many fundamental duties are present in the Constitution? अगर हम अभी बात करेंगे तो अभी हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे पास 11 है। पहले 10 थी, फिर 11 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। इट वाज लिस्टेड इन द 51A. Which fundamental duty was added by 86th Constitutional Amendment Act? 86th Constitutional Amendment Act के अंडर कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी? To defend the country and render the national service when called upon, और नहीं। To develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, नहीं। ये तो पहले से ही था। To safeguard the public property and abjure violence, it was also from the very when 42nd the Constitutional Amendment Act came. So the last option is to provide opportunities for the education to his child or ward between the age of 16 to 14 years. ये फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर लाई गई थी इन 2002. फीचर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू द सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर्स। जो फंडामेंटल ड्यूटी है सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है, न कि बाकियों के लिए। अब हमें बताइए कमेंट्स में आपकी फंडामेंटल राइट्स ऐसी कौन सी है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स देम व्हेन नेसेसरी। नो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दीज आर नॉन enforceable. Fundamental duties are non-justiciable. Correct. So option 1 and 3 are correct. Fundamental duty जो है वो non-justiciable है। Parliament of India can enforce the suitable legislation, not Supreme Court. अगर suitable legislation बनानी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना सकता है, न कि सुप्रीम कोर्ट। Parliament can make suitable legislation. Question number 87. Which of the following is incorrect? यहाँ हमें incorrect ढूंढना है peers में। Prevention of the insult to the National Honor Act 1971 is correct. Protection of the Civil Rights Act 1955 it is also correct. Representation of the People Act 1990 it is wrong. 1950 और 51 में आया था। Unlawful Activities Prevention Act 1967 is correct.
तो हमारे पास इनकरेक्ट ढूंढना था हमें, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है। Representation of the People's Act 1951 is an act to provide for the conduct of elections and of the House of Parliament and House of Legislature of the each state, the qualifications and disqualifications for the membership of those houses. Question number 88. In which of the following parts of the Constitution of India are enshrined the fundamental duties? Fundamental duties, Part 4A में. Consider the following statement. Sovereign Committee suggests the incorporation of the 8 fundamental rights in the Constitution of India. Fundamental duties डालनी है, 8 उसने सजेस्ट की थी. 42nd Constitutional Amendment Act include all the fundamental duties based on the recommendations of the Sovereign Committee. ये तो गलत है. सिर्फ only is correct. जो Sovereign Committee इसने 8 fundamental duties सजेस्ट की थी. एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हमने किया, हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की. फिर 11th हमने कब की थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी. इसमें ऐसी कौन सी ड्यूटी दी गई है ऑप्शंस में जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. वो टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, इट इज़ नॉट फंडामेंटल ड्यूटी. To develop the scientific temper, it is fundamental duty. To safeguard the public property and abjure violence, it is also fundamental duty. Paying tax is not. So हमारे पास ऑप्शन 2, 1 and 4 are correct क्योंकि ये दो fundamental duty नहीं है. Now from 91 to 100 we are going to do the MCQs and these are from the amendment of the Constitution of India. वहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम. Which part of the Constitution deals with the amendment of the Constitution and this procedure? Part 20 जो है वो कंटेन करता है आर्टिकल 368 जहाँ पर हमें पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट के, वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड इसके प्रोसीजर को. Parliament cannot amend the provisions which form the basic structure of the Constitution. This was ruled by the Supreme Court in Case Vanandabad case 1973, 24th of April. Consider the following statements regarding the procedure for the amendment of the Constitution of India under Article 360. जब Article 360 के अंडर हमें अमेंडमेंट लाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है. एन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, नहीं ये तो राज्यसभा में भी हो सकता है. द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेजिडेंट, नहीं प्रेजिडेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए अगर आपको पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लानी है. द प्रेजिडेंट कैन विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन, नहीं जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आती है तो उसको उस पर असेंट देना ही देना होता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल can be introduced in either house of the parliament but not in the state legislatures. The bill does not require prior permission of president. When the bill is presented to the president for his assent, he must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for the reconsideration of the parliament. Article 9, question number 94. As per Article 368, the constitutional amendment bill must be passed in each house by a, हर एक हाउस में किस तरह से पास होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बाय द स्पेशल मेजॉरिटी बाय ईच हाउस. हर हाउस के पार्लियामेंट के हर हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी आनी चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 368 के अंडर पास हो सकती है. क्वेश्चन नंबर, इसका में एक्सप्लेनेशन दिया गया है. द स्पेशल मेजॉरिटी बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल 368 talks of the two types of amendment, so that is by the special majority of parliament and also through the ratification of the half of the states by simple majority. The special majority in Article 368, a majority of total membership of the house, majority of 2/3 of the members present and voting. या तो जो जितने टोटल मेंबरशिप है उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ 2/3 आपको होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में. Question number 95. There are some provisions in the Constitution that can be amended by a simple majority of the two houses of Parliament
and are outside the scope of Article 368. These provisions include हमारे पास कुछ प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में, एंड वो 368 के बाहर हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको 368 का चाहिए और वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकता है। यूज़ ऑफ इंग्लिश इन द पार्लियामेंट, इसके लिए हम सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट और रीनेमिंग ऑफ द स्टेटस, इसमें भी हम 368 के बाहर से आर्टिकल 3 के अंदर इस चीज़ को ला सकते हैं। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 295 का करेक्ट आंसर 2 and 3। Fundamental ideas DPSPs can be amended by special majority. Some provisions of in the Constitution can be amended by special majority of Parliament and also require the half of the state legislatures by a simple majority. These provisions are election of president आपको special majority भी चाहिए and half of the state legislature की by simple majority consent मिलना चाहिए. Extent of the executive power of the union and states, it is also correct. Supreme Court and High Court, I'm sorry, it is also correct. And goods and service tax, it is also correct. So all of the above are correct. Question number 97, find the incorrect statement हमें इसमें ढूंढना है। The constitutional amendment bill can be introduced by minister and not by the private member bill, it is incorrect. Constitutional amendment bill है वो कोई भी member ला सकता है, चाहे वो minister हो या private member हो। The power to initiate an amendment bill lies only with the parliament, correct. The bill must be passed in each house by special majority, correct. There is no provision for joint sitting of the houses in the constitutional amendment bill, it is also correct. Which constitutional amendment act conferred constitutional status to the National Commission for Backward Classes? National Commission for Backward Class को किसने constitutional status दिया था? It was by 102 Constitutional Amendment Act 2018. Question number 99. 101st Constitutional Amendment 2016 was related to GST. GST, Goods and Service Tax, under GST. 101 Constitutional Amendment Act 2016. Which constitutional amendment reduced the voting rights from 21 to 18 years? इसमें ऐसा कौन सा constitutional amendment act है जिसने voting rights को reduce किया था, कहाँ से 21 years से 18 years तक? It was 61st constitutional amendment act 1989. तो यहाँ पर हमारे 100 questions complete होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप बताइए कि क्या आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा और चाहिए, एंड आप कमेंट्स में ये भी लिखिए कि क्या आपको ये PDF चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए वो फिर मैं आपके लिए अवेलेबल रखूँगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।